and we are streaming live on Facebook as well. That's awesome. Assalamu alaikum, Payoneer Pakistan official group members. We are here with another interesting Friday GupShup with Hassan Shahid. हमारे साथ मौजूद हैं. Assalamu alaikum Hassan, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक. आप बताएं कैसी हैं? बस ठीक ठाक, thank you. आपको थोड़ा सा ग्रुप के बारे में तो थोड़ा सा पता ही होगा because Payoneer और Kickstart का काफी पुराना और अच्छा रिलेशनशिप रहा है and अभी भी है. So ग्रुप के बारे में थोड़ा सा बता दूं. इसमें हमारे बहुत एनर्जेटिक फ्रीलांसर्स और बिजनेस ओनर्स हैं, एजेंसी ओनर्स हैं. ये लोग तमाम वैसे लोग हैं जो कि बिजनेस कर रहे हैं और इनका इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं जो कि पेनियर इस्तेमाल कर रहे हैं या इस्तेमाल करने का सोच रहे हैं. सो हम ये फ्राइडे गपशप्स करते हैं जस्ट टू ईज इन टू द वीकेंड. थोड़ी सी गपशप हो जाए ताकि जो है लाइक वीक का जितना स्ट्रेस है वो हम अगर थोड़ी सी हम कोशिश कर सकते हैं उसको कम करने की तो वो हम ट्राई करते हैं. और एट द सेम टाइम हम लोग क्योंकि अब ऑफलाइन इवेंट्स नहीं कर पा रहे यानी कि हम मिल नहीं पा रहे हैं अपने लोगों से और जो है बातचीत उस तरह से नहीं हो पा रही बट लाइक हमने सोचा कि इस तरह से लाइव जाया जाए एवरी वीक फ्रॉम द ग्रुप ताकि जो है हम जितनी कम्युनिकेशन उनसे जारी रख सकते हैं वो जारी रहे. सो हसन ये तो हो गया थोड़ा सा ग्रुप के बारे में. सो हाउ हैव यू बीन एंड व्हाट इज किकस्टार्ट? ठीक है. आई हैव बीन रियली गुड फॉर इन द पास्ट टाइम और किकस्टार्ट भी अच्छा चल रहा है. कोरोना में काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं बट उसके बारे में बात करते हैं वन बाय वन. किस तरह से चैलेंजेस हैं, क्या हम उसके बारे में कर रहे हैं, व्हाट डज आवर टीम थिंक राइट नाउ. जो जनरली व्हाट डज किकस्टार्ट डू? किकस्टार्ट इज बेसिकली a co-working space network. We have locations in Lahore where we provide office spaces, managed offices, co-working desks, as well as business support services to entrepreneurs, startups, small and medium enterprises. We have a lot of customers जो कि बाहर से भी आते हैं पाकिस्तान और आके अपनी कंपनी स्टार्ट करते हैं. One example could be जिस स्विवल पाकिस्तान में लॉन्च हुआ so they hired Kickstart office, Payoneer itself. बाइकिया भी जब when they wanted to start their operations in Pakistan तो उन्होंने Kickstart से start किया. So what we do is we help all of these companies in starting their operations. They don't have to go through any hassle of setting up their office space and as well as उसको manage करने में उसमें हम उनको सारे हेल्प कर रहे होते हैं. बट अदर देन आवर ऑफिस स्पेस जो बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज हैं जिसके अंदर हम अभी लीगल सर्विसेज, अकाउंटिंग सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज ये हम कुछ सर्विसेज हैं प्रोवाइड कर रहे हैं. और इसके साथ वी हैव अ फ्यू अदर सर्विसेज जिसमें एक राइडर सर्विस है. अगर आपको कोई बैंक से इफ यू वांट टू डिपॉजिट अ चेक या कोई जो आपके सैलरी डिपॉजिट्स हैं वो अगर कहीं पे कराने हैं यू नीड राइडर सर्विसेज तो यू कैन instead of relying on someone you don't know, like in case of Baikia or in case of Kareem, you don't know the rider, आप उसको अपना चेक नहीं दे सकते. So Kickstart ने भी ये सर्विसेज शुरू की है for corporates. Whoever is member of Kickstart, they can use this service for free. And this service was actually launched during COVID क्योंकि members they couldn't access our offices. All of these companies they couldn't reach out to their employees. So that's why we started this rider services to help people in doing their different minor business chores that they require every day. Yeah. Very interesting. So we'll talk about a little bit. I'd like to basically ask you to share the story of Kickstart. Where did it start from? Who came up? Why did you think of starting a co-working space in the first place? Yeah. So the story for Kickstart is quite exciting, and the reason I say is that because we had no idea that we are going to start a co-working space. We were never actually planning to build a co-working space, and we have three. I have two other partners in this business. So all three of us, we were LUMS graduates. When we graduated in our first year, at that time I was doing another at Kickstart. So I was incubated at Plan 9, which is in Alpha Tower building. So my main focus was building my own startup, and that was what I was doing. And while जब हम ग्रेजुएट हुए थे प्लान 9 से सो एट दैट टाइम उस वक्त कोई कोवर्किंग स्पेस थी नहीं. सो वी हैड हमारे पास एक इंक्यूबेशन थी. इंक्यूबेशन की उस टाइम पे बिल्कुल इट वाज अ न्यू कांसेप्ट. आई एम टॉकिंग अबाउट 2015. सो बाय द एंड ऑफ 2015 हमें वी रिक्वायर्ड एन ऑफिस स्पेस. तो मेरी उस टाइम पे 6 लोगों की टीम थी. हमें अपने लिए ऑफिस स्पेस रिक्वायर्ड थी और मेरे साथ और भी जो स्टार्टअप्स थे दे आल्सो नीडेड द ऑफिस स्पेस. बट उस टाइम पे there was no concept कि आप कहीं पे ऑफिस
ले सकते हो per seat model पे. So I went out to see different buildings in Gulberg. I saw a lot of buildings in DHA as well. और जब हम उन buildings को देखने जाते थे और वहाँ पे अपने offices के लिए उनसे बात करते थे तो a few problems जो है वो जो उसमें से निकलते थे, they were के the upfront expenses for setting up your office was too much. I couldn't bear those expenses. अपनी टीम 6 लोगों की टीम के लिए. Also, you cannot really acquire a small space if you have a small team. So मेरे केस में ये हो रहा था कि I could only rent out an 800 square feet floor or a 1600 square feet floor. मुझे इतनी सारी space की भी ज़रूरत नहीं थी, but there was no other option available. Also, I had to pay all that security deposit, and then I had to make all the upfront expenses जो कि उसको उसके बिल्ड आउट में चाहिए, जिस तरह एयर कंडीशनिंग चाहिए, जिस तरह आपको फर्नीचर चाहिए, आपको उसकी फ्लोरिंग करनी है, सीलिंग करनी है. एंड इन अ ट्रेडिशनल लीज जिस तरह मैंने यहाँ पे पाकिस्तान में देखा है और किसी भी ट्रेडिशनल लीज में यही होता है कि आपको एक बिल्डिंग मिल जाती है एंड इट्स जस्ट द एम्प्टी फ्लोर, देयर इज नथिंग इनसाइड इट, देयर आर नो सर्विसेज एसोसिएटेड विद दिस. सो एट दैट टाइम वी हैड दिस आइडिया कि व्हाई डोंट वी शेयर आवर ऑफिस. तो अभी हमें ये आइडिया आ गया था कि हम कोवर्किंग स्पेस बना सकते हैं. वी कुड शेयर दिस विद अदर स्टार्टअप्स. सो मेनी स्टार्टअप्स वुड बी इंटरेस्टेड बिकॉज़ आई वाज सिटिंग इन एन इंक्यूबेटर एंड आई न्यू अ लॉट ऑफ अदर स्टार्टअप्स ऑफ दैट टाइम. तो लेकिन हमारा मकसद भी हम कोवर्किंग स्पेस नहीं बनाना चाहते थे. आई वाज वर्किंग ऑन अनदर एडटेक कंपनी. मेरा उसके साथ मकसद सिर्फ ये था कि मैं अपने लिए ऑफिस का सोल्यूशन थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव कर लूं. जब हमने इसको लॉन्च किया, सो आई वुड लाइक टू शेयर माय स्क्रीन एंड शो यू समथिंग अबाउट व्हाट हैपेंड. Yes, please. Yeah. Yes, can you see this presentation now? Yes, now we can. Yeah, okay. So let's go to back in 2015. So this was the first space that we launched, and in this building जब हम इसको देखने गए तो the first time I went there I was with a dealer. I was looking for property just for myself. तो मुझे ये building अच्छी लगी. मेरे साथ जो एक और partner उस वक्त साद रियाज था, मैं और साद रियाज हम इसको देख रहे थे. तो we were thinking कि हम इसको इस building को share कर लेंगे with 2 or 3 more startups. तो आई रिमेंबर साथ का एक दोस्त था, उसको भी स्पेस चाहिए थी. तो हमने सोचा कि हम इसके ऊपर एक शेयरिंग ऑफिस बेसिस के ऊपर एक मॉडल बनाते हैं और उसके बेसिस पे डिवाइड कर लेंगे. सो द रीजन व्हाई वी केम टू दिस मॉडल वाज बिकॉज इन 2015 व्हेन आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम रम्स आई रेंटेड आउट एन अपार्टमेंट. एक घर था 10 मरले का, उसके अंदर 5-6 बेडरूम थे. बिकॉज मैं आई एम नॉट फ्रॉम लाहौर, सो मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ अपने लिए जगह चाहिए थी. तो उस घर के अंदर हमने ये किया कि बहुत सारे और जो मेरे साथ स्टूडेंट्स उस टाइम पे ग्रेजुएट हुए, मैंने उन सबको एक रूम या पर बेड बेसिस के ऊपर उसको रेंट आउट कर दिया. सो एज अ रिजल्ट मेरा अपना जो लिविंग एक्सपेंस था वो काफी कट हो गया. सो आई हैड दिस आइडिया कि व्हेन यू शेयर अ प्रॉपर्टी, चाहे वो लिविंग स्पेस हो या वो वर्क स्पेस हो, इट कैन एक्चुअली सेव यू अ लॉट ऑफ मनी. So I wanted to just share this building with other startups. That was my intention, and we were not thinking of setting up a co-working space. But लेकिन जब हमने ये फ्लोर देखा, हमने इसके ऊपर एक मॉडल बनाया. So हमने कोई काम नहीं किया था, एक रात बस हमें ख्याल आया तो हमने उसके ऊपर इट वाज न्यू ईयर्स नाइट. तो हमें थोड़ा ये था कि नया साल भी शुरू हो रहा है और हमने कुछ किया नहीं है. पिछला स्टार्टअप मेरा तो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा था. सो आई रियली वांटेड टू कि थोड़ा इसको टर्न अराउंड करें. और मैं उस वक्त सिर्फ अपने स्टार्टअप के बारे में सोच रहा था, कोवर्किंग मॉडल का इतना तब सोचा नहीं था. तब हमने अपने साथ जितने लोग जिनके साथ शेयर कर सकते थे, हमने उनको एक व्हाइट बोर्ड पे लिखा, उनके सामने उनका रेंट लिखा, सिक्योरिटी लिखी, वो कितना दे सकते हैं, उसका टीम साइज लिखा, फैसिलिटीज एक बेसिक सी. दिस इज यू कुड से दिस इज अ 1-pager बिजनेस मॉडल फॉर अ कोवर्किंग स्पेस. सो इट वाज जस्ट अ 1-pager डिस्क्रिप्शन के ये पैकेजेस होंगे. उस टाइम पे वी वर चार्जिंग अराउंड 4500 पर सीट, यही हमारी प्राइसिंग थी. और इस प्राइस के ऊपर भी वी वर मेकिंग ऑन व्हाइट बोर्ड, नॉट इन रियल, ऑन व्हाइट बोर्ड वी वर मेकिंग 100,000 प्रॉफिट अ मंथ. तो जब हमें वो नजर आया कि एक छोटी सी स्पेस के अंदर भी इवन पीपल कुड शेयर and they could derive a lot of value from this. It is very cost effective for those startups because 5,000 was nothing per seat. Because मुझे उस टाइम पे एक अपनी 6 लोगों की टीम के लिए I had to pay at least 60,000 a month, and this was just rental. So in 5,000 per seat, we were giving all of the services, जिसमें टी, कॉफी, इंटरनेट, ऑफिस बॉय की सर्विसेज, ये सब कुछ शामिल था.
तो हमने एक रात में इसको मॉडल बना दिया। उसके बाद हमने ये किया कि हमारे पास कोई स्पेस नहीं थी। आवर मॉडल इज कि हम जगह रेंट करते हैं, उस जगह को रेंट करने के बाद वी फर्निश द स्पेस, वी ऑप्टिमाइज इट। अब हम पूरी बिल्डिंग्स करते हैं, इससे पहले हम एक फ्लोर करते थे, बट उस टाइम पे हमारे पास कोई स्पेस तो नहीं थी। सो हमने एक चीज सोची, हमने ये सोचा कि वी विल एडवर्टाइज आवर सर्विसेज जस्ट टू सी कि लोगों का रिस्पॉन्स कैसा आता है। Because co-working by nature, it's a very capital intensive business. You have to put in a lot of resources first, and only then you can go move on to selling your product. So what we did was we created this very simple flyer. मुझे अभी भी याद है कि Kickstart का तब हमने लोगों बस ये सोचा कि थोड़ा सा उसको ब्लू कर देते हैं, बाकी को ऑरेंज कर देते हैं, एंड जस्ट मर्ज इट, तो ये Kickstart का लोगो बन जाएगा। हमने उसके ऊपर अपने पैकेजेस एडवर्टाइज किए, और उसको एडवर्टाइज इस तरह से किया कि यू कैन गेट योर ओन ऑफिस इन जस्ट 12,000 रुपीज एंड किक स्टार्ट योर बिजनेस। सो वी नेम्ड इट किक स्टार्ट ऑन द न्यू ईयर्स ईव बिकॉज हमें ये अच्छा लग रहा था नाम, किक स्टार्ट योर बिजनेस। आई जस्ट वांटेड टू किक स्टार्ट माय अदर एडटेक कंपनी फ्रॉम दिस ऑफिस स्पेस, सो दैट वाज द एंटायर आइडिया। बट जब हमने इसको लॉन्च किया, सो आई शो यू पिक्चर्स, दिस इज द फ्लोर जो जब उस पे काम हो रहा था। हियर इज, यू कैन सी Sajaz and Fajraz are there, they were here from very first day. So most in this building, most of the paint work, the electrical work हमारी टीम ने वो मेजरली खुद ही किया, और उस टाइम पे हमारी टीम से मुराद जस्ट मी एंड द co-founders, that's it. उसके बाद so this was the final product. It's still very simple, but yeah, this is how it turned out. हमने इसके अंदर एक co-working manifesto बना दिया. We just wrote a bunch of stuff like you can kickstart your work, get shit done, motivational things like that. But हुआ ये कि on our day one जब हमने ये launch की, so we locked this property on February 1, and right on that same day we were, so you can say we hit our break even on very first day. So how this happened? So what we did was we advertised our co-working plans on January 16th, just 2 weeks before our launch, and we advertised कि हम launch कर रहे हैं February 1 को, और हमने startup से और different जो उस time पे मेरे अपने दोस्त थे जिनको space चाहिए थी, हमने उनसे engage करना शुरू कर दिया। We gave them a timeline. अभी हमारे पास space हमने lock भी नहीं की हुई थी, आज मुझे बस इतना पता था कि ये floor available है, और उसके बाद हमने ओनर से एक दिन, ओनर्स का भी उस वक्त डीलर हमारे साथ एंगेज कर रहा था, हमने बस डीलर से उसका किराया और उसकी बाकी सारी जो कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स थी वो उसकी हमने फाइनलाइज की। February 1 was the day जिसपे हमारा किराया शुरू हो रहा था, और हमने टोटल ये स्पेस 3 दिन में बनाई because we couldn't afford to lose money, we couldn't afford to keep our space vacant for another month because we had no money. मेरा पिछला स्टार्टअप फेल हो रहा था, तो मेरे पास जो पैसे बचे थे I just put all of that in this floor. और उसके बाद on our very first day February 1 हमने जब इसको लॉन्च किया तो हमारे पास तकरीबन 3 teams signed up, a total of I think 12 persons they signed up on the very first day. We actually paid our rent from our first revenue that we earned from our day one. So that day we realized that this is something bigger. It's not just a shared office. This concept could kick off. We only need to figure out how this sharing thing works, how spaces can be, how we can make spaces, and how we can optimize these spaces and create value for the startups. And nobody was catering to startups at the time. हमारा पहले जो शुरू में लोगों के साथ interaction होते थे उसके अंदर it was so hard to convince people के co-working space में आ जाए because they thought कि it's a shared office, और shared office में एक कंपनी अगर दूसरी कंपनी के साथ बैठी है तो दोनों के जो आपस में how would they work, operations कैसे चलेंगे, वो अगर business model चोरी कर लें, ये एक बड़ा concern होता था लोगों का, तो ये चीजें सारी किस तरह से हो रही होंगी। So this was the story of Kickstart. So when this thing kicked off, लोगों की तरफ से हमें बड़ा positive response मिला, हमने कुछ events वहाँ पे कराने शुरू किए, जिसकी वजह से हम startups के अंदर और थोड़ा सा popular हुए, और हमारी जो space थी, I think it took us 2 to 3 months to completely fill it up. After 6 months, we launched another space in Johor town. At that time, we were very skeptical of this concept. So as of right now, you might see a lot of co-working spaces, and during COVID, you have seen that a lot of co-working spaces are in problems. But before COVID, Lahore has witnessed a lot of expansion in this industry. So, but in 2016, when we launched this space and when we were trying to
test this model in other places. Like we did it in DHA, and then we wanted to try in Johor Town because that was a different locality. So we wanted to test it. We were very skeptical at the times about our business model and the value that this business model provides. So after 6 months, हमने Johor Town में एक और space launch की. वो space भी हमने almost at the same price point, 5,000 to 6,000 per seat. और वो space भी हमने शायद I think we did that space in less than 10 days. So हमारे पास उस time पे I remember भी हमारे पास इतना time नहीं होता था कि हम एक space को lock करें, उसको rent देना शुरू कर दें और फिर उस space के अंदर हम build out के अंदर 2-3 महीने लगाएं. हम deal करते थे, we had to make it in 10 days and then we had to sell it. So otherwise we couldn't have sustained because हमारे पास कोई investment नहीं थी, हमने bootstrap किया. All of the co-founders, they put in they put in same amount of money and they put in same amount of effort in this business. So ये था शुरू में जो पहला साल था हमारा. Very interesting. So yeah. Sorry, I have a question. So you said that you wanted to test the waters to see कि क्या हो रहा है. So you said you had a few of your friends who were also like graduating and thinking of working and wanted their own space. एक तो ये तरीका हो गया कि like अपने जो है लोगों से आपने बात कर ली. Was it all word of mouth या आपने कोई specifically भी आप like for example जैसे आप startups के लिए did you go to like for example did you go to a place like NIC या Plan 9 and did advertise over there? Yeah, we did advertise ourselves. We advertised ourselves massively because we had to sell our space. Even before launching, even before acquiring the space, we started advertising just to see कि लोगों का response कैसा आता है. We got some leads from that advertisement और उसी advertisement में जो leads आई थी, I think we converted those leads on our launch day. So advertisement and sales, I think these two things have been there since this company started. और इसके बगैर हम नहीं कि we couldn't have kicked this off. Or word of mouth, yes, it was a lot of marketing was done through word of mouth because I was very connected in those circles. The edtech company was incubated at LUMS initially, and then we went to Plan 9. So I had experience of all these incubators, and that's why I think it was a good decision to like just go and talk to people. This actually helped us improve our product क्योंकि हमें कुछ idea नहीं था कि हमें क्या बनाना है और हमें ये भी नहीं पता था to be honest कि co-working का model पूरी दुनिया में exist करता है. So हमें वो तब पता चला जब हमने यहाँ पे launch कर ली, उसके बाद हमें पता चला कि नहीं ये model है और ये पूरी दुनिया में exist करता है. It's a valid model, it works. And it's everywhere else in the world, बस पाकिस्तान में नहीं है because nobody thought of this. And frankly, हमें मतलब ये idea मतलब इसी तरह बस it was sort of a need for us. हमें बस अपने लिए इस जगह चाहिए थी. इसके अलावा अगर हमारे पास अगर कोई और context होता तो I think I wouldn't be here या कोई इस तरह की चीज होती तो we wouldn't have been doing this right now. लेकिन जब हमने yeah please go ahead. Sorry, so I just wanted to know, like once you did find out किस तरह से दुनिया में भी हो रहा है, तो how did that affect your plan, the initial plan to take this forward? Were you more convinced to do it? Yeah, and like I want to see कि आपने क्या ऐसी best practices उठाई हैं like दुनिया को देखते हुए जो कि आपने implement की और उसका क्या impact रहा? Yeah, so जब हमें पहली दफा पता चला कि नहीं ये दुनिया में हो रहा है तो हमने उनकी वेबसाइट देखी, we did a lot of research. हमें थोड़ा उससे एक ना वो मिला confidence मिला कि yes, this thing is working elsewhere, so it could work in Pakistan because अगर एक business model में जान ही नहीं है तो nobody would be doing that. And I'm the kind of person who believes कि कोई ऐसा idea नहीं होता जो कि नया होता है. Things are already out there. You just have to do a Google search and you will find something somewhere in the world. So अगर मुझे ये ना मिलता तो I'm sure कि इस business model के अंदर इतना potential ही ना होता. So this is how I think कि yes, क्योंकि ये पूरी दुनिया में हो रहा था, the industry was growing, it convinced us and it gave us confidence कि yes, पूरी दुनिया में chains हैं who are scaling this business. So yes, we should go into this and try out another space. That's why we launched our second space. जब हमने पहली launch कर ली थी तो उसके बाद हमें idea हो गया था कि yes, दुनिया में ये है. दूसरी space तक we knew कि how to scale this model. But उस वक्त तक हमारे पास पैसे बहुत कम होते थे, so we could only rent out a floor. तो अगर आप वैसे compare करें तो हमारी जो first property थी that was around
2000 स्क्वायर फीट, एक 8 मरले की बिल्डिंग का एक फ्लोर था. जो सेकंड प्रॉपर्टी थी, इट वाज 2500 square feet, just slightly bigger. We just wanted to test कि किस तरह से ये जौहर टाउन में ये मार्केट जो है परफॉर्म करेगी. But going into our third space जो कि हमने गुलबर्ग में बनाई, तब तक I think कि हमारी अपनी टीम को we learned a lot from our first year experience. We also sort of saved up some money क्योंकि हम पहले दिन से ही जब इस बिजनेस में थे तो आई थिंक के उस वक्त क्योंकि कोई और कोवर्किंग स्पेस नहीं थी, सो वी वर प्रॉफिटेबल ऑन डे वन. एंड जो पहला पूरा साल था, जो भी हमने उससे पैसे बनाए, वी इन्वेस्टेड दैट मनी अलोंग विद इन्वेस्टर्स मनी इन आवर थर्ड बिल्डिंग जो गुलबर्ग में थी. बट जब हम थर्ड बिल्डिंग पे आए तो इट वाज लाइक कि हम पूरी बिल्डिंग्स पे एग्जीक्यूट करने लगे बिकॉज वी वर मोर फोकस्ड ऑन प्रोवाइडिंग वैल्यू टू कस्टमर. और वी वांटेड टू क्रिएट प्रॉपर्टीज जो कि सिर्फ 1-2 साल की बजाय ज्यादा चल सकें, क्योंकि उससे पहले हम सिर्फ एक फ्लोर पे थे तो हमें उसके मसलों का थोड़ा आइडिया था. दैट्स व्हाई वी शिफ्टेड द ब्रांड फ्रॉम जस्ट 1 or 2 floors टू एंटायर बिल्डिंग्स. अभी हमने गुलबर्ग में जो भी बिल्डिंग्स अभी कर रहे हैं और जो फ्यूचर में करेंगे विद किकस्टार्ट, सो दिस इज आवर प्लान कि हम वो पूरी बिल्डिंग्स ही कर रहे होंगे बिकॉज इट गिव्स अस द अपॉर्चुनिटी टू ऑप्टिमाइज a lot of real estate. So what we understand is that this business is basically about real estate and how, in what way you optimize your the space that you have available. So that was the thinking behind the initial spaces and how we wanted to scale this. Very interesting. So and you are very right. इसका जो है काफी I won't call it trend because it was very is my screen still visible? Yes, it is. Yes. Yeah. So yeah, I'll show you some pictures from different buildings. So this was when we started our events. We started some communal activities, and this is our latest building, जो हमने गुलबर्ग में start की last year. This building, now we have jumped to, instead of just desks, we have also launched corporate floors as well as managed offices. So this is one of the managed office जो हम companies को यहाँ पे दे रहे हैं. This is our co-working area in Gulbarg location. And yeah, so this is one of the picture from our previous Gulbarg location. और कुछ इस हालत में हमें बिल्डिंग मिली थी, इसको हमने इसमें we turned it into this. तो पहली बिल्ड जो शुरू में हम प्रॉपर्टीज लेते थे, हम जरा सस्ती प्रॉपर्टीज लेते थे, उसके अंदर हमें बहुत ज्यादा काम करना पड़ता था, टीम को बहुत ज्यादा उसके अंदर चेंजेस करने पड़ते थे. तो ये but it was necessary for us क्योंकि उस टाइम पे we really wanted to cut down on our expenses. और सारा काम हमारी टीम मोस्टली खुद ही करती थी. इस बिल्डिंग तक जो भी हमारी नेटवर्किंग थी वो आप समझे को फाउंडर्स ने खुद की है, और जो बाकी सारे इसके काम थे वो भी मेजरली हमारी टीम ने खुद ही एग्जीक्यूट किए. तो या एंड आई कैन वाउच फॉर दिस कि जो भी लोग देख भी रहे हैं, पिक्चर्स भी जिन्होंने देखी हैं, ये जगह उतनी ही खूबसूरत और उतनी ही पीसफुल है जितनी अभी ये पिक्चर्स में नजर आ रही है. सो अभी जो आपने हमें पिक्चर्स दिखाई हैं ये आपकी गुलबर्ग वाली ब्रांच की है, राइट? जी बिल्कुल, ये दोनों गुलबर्ग दोनों गुलबर्ग की हैं. सो एवरीबॉडी हु इज वाचिंग राइट नाउ, मैं एनकरेज करूंगी कि प्लीज हसन शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं. ही इज शेयरिंग हाउ ही co-founded Kickstart, which is a co-working space in Lahore. आपके पास कोई सवाल हैं इनके लिए, हसन के लिए, तो प्लीज हमें कमेंट्स में बताएं ताकि हम उनसे जो है बातचीत कर सकें, आपके सवाल इंक्लूड कर सकें. हसन, हमें एक कमेंट आया हुआ है तलहा फखर की तरफ से, एंड ही इज सेइंग Kickstart is a great service provider. My own 2B Tech is also in 62C2 office. Yeah, he's one of our most favorite members. And yes, anyone will love 62C2. If I be honest, I think this is the most efficient, optimized co-working design. And ये मुझे उस वक्त पता चला जब COVID actually आ गया, because जब COVID आया तो we wanted to redesign our spaces. So our first problem was कि हमें co-working spaces का मकसद क्या है? इसका मकसद है कि it's a communal space. बहुत सारे लोग आते हैं, they share the service. But जब COVID आया, so we didn't want people to interact so much. और हम 4 साल यही मार्केटिंग करते रहे कि इवेंट्स पे आएं, join our community, join our co-working space, interact with each other so that you can learn, grow, etc. But with COVID, I think all of this completely changed.
कोविड की वजह से जो कोवर्किंग का जो सबसे बड़ा यूनिक सेलिंग पॉइंट है, विच इज कम्युनिटी शेयरिंग, वो बिल्कुल इट वेंट साउथ. So at that time, we wanted to change the design of our buildings in such a way that we could sustain in the longer run with minimal contact policy. So we had to redesign some of our floor plans. 62C2 में, which is our latest building, I think it is through by coincidence कि इसका design कुछ ऐसा है कि we could actually implement all of those safety standards minimal जो हमारे भी चल रहे हैं. हम यहाँ पे लोगों को without any contact हम उनको उनके ऑफिस तक, उनके डेस्क तक लेके आ सकते हैं. And our staff can ensure कि किस तरह से इस स्पेस को साफ रखा जा सकता है और इसको कोरोना फ्री रखा जा सकता है. Of course, we can't be sure कि कोरोना अंदर आएगा ही नहीं, but we are trying our best through design, through our practices and through our staff to keep our members safe. And now I think we have तकरीबन 3 महीने हो गए हैं कोविड की सिचुएशन को देखते हुए, and now things are turning around. So I think everyone has made a lot of changes to their spaces. अब मुझे लगता है कि things will be better in after this Eid जो अभी आ रही है. और and Kickstart भी अपनी जो हमारी जो सर्विसेज हैं और जो हमारी 62C2 या बाकी जो बिल्डिंग्स हैं, इसके अंदर भी हम आगे यही जो हमारी जो सेफ्टी प्रैक्टिसेस चल रही हैं और जो भी हमारे डिजाइन चेंजेस रिक्वायर्ड हैं वो हम काफी सारी चीजें कर चुके हैं. और बाकी चीजें कुछ हमारी ऐसी हैं जो कि हम बदलती हुई सूरत हाल को देखते हुए, सारी अनसर्टेनिटी को देखते हुए जो टीम है उसके पीछे लगी हुई है. और we will do all of those things and try to keep everyone safe, happy and help them with kickstarting their businesses. वेरी इंटरेस्टिंग. तो ये तो बात होगी कि जो अभी जो आप काम कर रहे हैं, और इस पे हम वापस भी आएंगे, मगर मैं थोड़ा सा जो है एक स्टेप बैक लेना चाहूंगी. एंड आई वुड लाइक टू डिस्कस समथिंग दैट यू डिड एज किकस्टार्ट, वेयर यू वर गिविंग अवे डेस्क्स फॉर पीपल टू वर्क फ्रॉम होम. So I would really like अगर उसकी थोड़ी सी स्टोरी शेयर कर सकें. What came up, who came up with the idea, and like how did you make it happen? So basically जब कोविड आया और लॉकडाउन हो गया लाहौर में, दिस वाज कंप्लीटली अनप्रेसिडेंटेड. मैंने कभी लाहौर को ऐसे नहीं देखा. पिछले 8 साल से आई हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी एंड आई हैव इंटरेक्टेड विद सो मेनी बिजनेसेस, बट इससे ज्यादा होपलेसनेस मैंने नहीं देखी थी. Within our team as well as within our members जिनको हम होस्ट करते हैं, Kickstart is currently hosting. Kickstart was hosting actually more than 500 members before COVID. अभी थोड़ा नंबर हमारी occupancy की वजह से is lower right now, but we have interacted with thousands of people जितने टाइम से हम ऑपरेट कर रहे हैं. And I think अभी जो कोविड का अभी जो सारा टाइम गुजरा, जिसमें स्मार्ट लॉकडाउन था, उससे पहले लॉकडाउन था और बीच में नंबर केसेस बढ़ रहे थे, ये जो सारा टाइम था, आई थिंक दिस इज कंप्लीटली अनप्रेसिडेंटेड. लाहौर ने इससे ज्यादा होपलेस टाइम नहीं देखा होगा. सारे कैफेज बंद हैं, सब बिजनेस ओनर्स, एंटरप्रेन्योर्स लाइक मी, पीपल इन माय सर्कल, सब भी जो हैं वो प्रॉब्लम्स के अंदर थे. तो एट दैट टाइम हुआ ये था कि हमारे मेंबर्स दे कुडंट कम टू ऑफिस स्पेस. वी कुडंट हमारी अपनी टीम भी ऑफिस नहीं आ सकती थी, और हमें एक बहुत ज्यादा एक नीड का एहसास हुआ कि लोगों को, बिकॉज पहले तो वो कोवर्किंग स्पेस में आके काम कर लेते थे, नाउ दे डोंट हैव अ प्रॉपर वर्क एनवायरनमेंट जिसमें वो प्रोडक्टिव फील कर सकें. सो हमारे ब्रांड की एक मेन चीज ये है कि वी ट्राई टू कीप पीपल प्रोडक्टिव. We try to give them an environment जिसके अंदर वो ग्रो कर सकें, जिसके अंदर उनका बिजनेस फंक्शंस जो है वो सारे बिजनेस ऑपरेशंस जो है वो चल सकें. So at that time came up, we were trying to come up with a work from home solution कि जो हम उनके घरों पे उनको environment provide कर सकें. बट उस टाइम पे फिर हमें ख्याल आया एक कार्डबोर्ड डेस्क का, which is, if I can share my screen, it's on website. Please. Yeah, because I would like everybody to see this. This was like very interesting, and I do want to order one for myself as well. Okay, so can you see the screen now? Yes, now we can. It's opening the Kickstart website. Yeah, it's basically on our website. I couldn't pull it off. Yeah, so I mean, what an inspiring concept. Like, you stayed true to what your brand was about, like, providing a workspace for people to work.
बट अगर वो आपकी तरफ नहीं आ सकते, आपके को वर्किंग स्पेस तक नहीं आ सकते, तो आपने उन लोगों तक वो जो है सहूलत पहुंचाई कि वो लोग जो है घर पे रहते हुए अपने काम जो है वो जारी रख सकें. So exactly. it's very interesting to see. Yeah, exactly. That was the idea कि हम उनको, क्योंकि because हमारे brand का ये है कि we try to give people an environment in which they can feel productive and they can work. So all we wanted to do was give them the environment, give them the ability कि वो घर पे भी काम कर सकें. I don't know why the page isn't loading right now. Let me try again. Let me try opening it. It's taking a while to load on my page as well, but maybe we can pull it from the Facebook page. Yeah, I can. I think it's open now. Yes. So here is the web page. If I play the video, I think you will be able to see how it's made. Are you able to see the video? Yeah. Yes. ठीक है, तो इसके अंदर ये था कि we wanted something really simple, minimalist, as simple as cardboard, because we wanted to give the idea कि काम जो है ना वो कहीं भी हो सकता है. आप अपने घर पे काम कर सकते हैं, आप अपने लॉन में काम कर सकते हैं. इफ यू पैक दिस थिंग इन योर कार, तो आप कहीं पे भी, बेशक जहाँ पे आपका दिल करे, आप इसको अनपैक करें, आप वहां से काम करें. So this was the concept, जो कि बस it was a raw concept. हमें बिल्कुल प्रोडक्ट का नहीं पता था हम क्या बनाएंगे. एक दिन ये हुआ कि हम बस सोच रहे थे कि हम किस तरह मेंबर्स को जो है वो उनके घर के ऊपर एनवायरनमेंट दे सकते हैं. मेरी जो डिजिटल एजेंसी जिनके साथ मैं काम करता हूँ, ब्रांड नेम, आई वुड रियली लाइक टू मेंशन देयर नेम हियर. उन्होंने, मैडम फाकिया आई कॉल हर, उन्होंने शेयर दिस आइडिया विद मी, एक कॉन्सेप्ट कार्डबोर्ड डेस्क का. हमने वो कॉन्सेप्ट जैसे ही मैंने देखा, आई इमीडिएटली थॉट के यस वी कुड मेक अ टेबल, और उस टेबल को हम सेल कर सकते हैं. कार्डबोर्ड जो है वो वन ऑफ माय पार्टनर्स इन किकस्टार्ट, he happened to his father actually happened to have a cardboard plant. वहां पे हमने प्लांट के ऊपर थोड़ा सा वो किया. कोविड के दौरान हमारे पास काम तो खत्म हो गया था, बिल्कुल ऑफिस बंद थे, तो हम तीनों पार्टनर्स हम बस प्लांट पे गए. एक दिन हमने वहां से इसका एक प्रोटोटाइप बनाया. शुरू में हमारा डिजाइन स्टेबल नहीं हो रहा था, डिजाइन के अंदर बहुत सारे मसले थे, टेबल स्टेबल नहीं हो रहा था बिकॉज कार्डबोर्ड का था. हमें खुद भी ट्रस्ट नहीं था कि ये कार्डबोर्ड के ऊपर जो है ना वो we could actually make it sturdy enough कि ये कुछ 40-50 किलो का वेट उठा ले. लेकिन फिर थोड़ा सा हमने उसके डिज़ाइन को देखा, और फिर हमें एक आइडिया आया उसके डिज़ाइन आइटरेशन में, और उस डिज़ाइन की वजह से काफ़ी स्टर्डी हो गया. और उसके बाद फिर हमने इसको लॉन्च किया. जब हम इसको लॉन्च कर रहे थे तो आइडिया बहुत ही सिंपल था कि बस हम लोगों को वी विल गिव देम दिस प्रोडक्ट के वो अगर काम करना चाहें कहीं से भी, दे शुड हैव, सम पीपल शुड हैव द फ्रीडम टू वर्क फ्रॉम एनीवेयर, चाहे वो घर पे हो चाहे वो ऑफिस पे हो. तो ये डेस्क था, और इस डेस्क को आप 10 मिनट में असम्बल कर सकते हैं. 2500 रुपए का ही आता है. मार्केट में उस टाइम पे अगर मैंने देखा था, ये जो रिसेंट जैसे कोविड हुआ तो सारी फर्नीचर कंपनीज जो है ना वो अपने डेस्क जो है वो सेल करने लग गई थी. उनके सॉल्यूशंस जो थे वो 40-50 हज़ार टाइप्स के थे. तो we wanted to create something simple, so we just created this 2500 table जो कि आप कहीं पे भी असम्बल कर सकते हैं. It's very good for students, very good for someone who works from a laptop, very good for girls who have problems कि वो डेस्क को कैसे मूव करें एक जगह से दूसरी जगह. बहुत लाइट वेट है, it's just 4 kgs. Yeah, so very lightweight 4 kgs. इसके बाद हमने एक और भी डेस्क का मॉडल भी लॉन्च किया है. It's a wooden desk, as simple as this one, delivers in a flat pack. वो भी अगर आप yes, I think I might be able to show you that as well. That's in process. वो भी हमने लॉन्च नहीं किया, होने वाला है. You're still sharing your screen with everybody, just FYI. Yeah, I think we're good. No problem. Okay. So everybody in the Payoneer Pakistan group who's tuned in and listening to this conversation, thank you so much for joining in. And abhi hamare saath maujood hai Hassan Shahid. He is the co-founder, one of the co-founders of Kickstart co-working space in Lahore.
एंड अभी वो हमारे साथ अपने आइडियाज शेयर कर रहे हैं कि कोवर्किंग स्पेस तो पेंडेमिक से पहले बहुत बेहतरीन चीज़ थी, बट लाइक उन्होंने किस तरह से अपने बिजनेस को जो है डाइवर्सिफाई किया और टू बी एबल टू मीट द नीड्स ऑफ द आवर, उन्होंने while staying true to his brand, how was he able to create an impact? Yeah, so, and sorry, I'm cutting you. You can complete, no, and no, then please. I'll show you this. Yeah. Okay. So Maybe open pictures because the conversation is visible. Oh, it's a new video. Yeah, it's a video. It's a new product actually. Okay, we're not able to see the video because I think it opened in another window. Uh-huh. I think you need to unshare this Yes. Google. Yeah. Yeah, I got it. Stop share. Okay, I've stopped the share. I'll have to reshare now, right? Yes, and when you share, तो वो नीचे एक ऑडियो की ऑप्टिमाइजेशन का एक चेक बॉक्स आ रहा होगा जो पॉपअप आएगा विंडो शेयर करने के लिए. Optimize screen for video clip. Yes. Sound भी. Okay. Share screen. Share. Okay. Can you see now? We can see, yes, it's the folder for videos. Okay, yes. No. अच्छा, I think आपकी वीडियो जो है उसमें खोल रहा है, लाइव में खोल रहा है. Films and can you TV see वाला now? जो है वो. Yes, Can we you can. see now? Yeah. Okay. Yes. So here is the video. This is a new table product which is about to launch in another week's time or so. म्यूजिक की वजह से आपकी आवाज नहीं आ रही है. Yeah, that's it. That's it. Very interesting. So जो इसकी the legs are also wooden या metal की हैं? Metal का frame उसके ऊपर wood आ रही है? वो metal है. हमने जब ये BYOD build your own desk का जो कार्डबोर्ड डेस्क हमने सेल करना शुरू किया लाहौर के अंदर, लोगों की तरफ से बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला. People were looking for work from home solutions. Log, I think they also supported us. They wanted to support this new product. That's why so many of them, they bought this product. और हमें एक feedback वहाँ से ये मिला कि they would also like to see something in wood. So for a wooden table, we had to go with metal frames. We wanted table के वो ऐसा ही हो, flat pack में जाए, as simple as our previous BYOD product. तो इसको फिर हमने we changed the design a bit, उसको थोड़ा हमने flexible रखा. आप इसको कहीं पे भी बस unfold कर सकते हैं. It's a really simple table, really simple product. But why we do this? We do this because Kickstart का purpose है to create environment for people, to create environment for people who want to work. और अगर आप घर पे हैं तो हमारे पास उसकी एक membership plan भी है. If you buy this table, you can get some additional services along with the table, like you can still use meeting rooms at Kickstart, you can still access our locations, you can still call our rider and manage your business chores. तो हम कुछ टेबल के साथ add-ons offer करते हैं. अगर आपके पास घर में टेबल है, it doesn't really make a difference. आप ऑफिस में हैं या घर में हैं, you can still think कि आपका काम जो है ना वो अच्छा चल सकता है. So that was the concept जिस पे हम ये टेबल बना रहे थे. Yeah. Interesting. So आपके भी वेबसाइट के ऊपर तो कार्डबोर्ड बॉक्स का लिखा हुआ है और वहाँ से हम ऑर्डर कर सकते हैं. If anybody, because मौसम की तरफ से सवाल है and he loves the table as well. So पूछ रहे हैं कि कोई हम प्री ऑर्डर अगर किसी ने करना हो तो कैसे कर सकते हैं? क्या हम कर सकते हैं प्री ऑर्डर? बिल्कुल प्री ऑर्डर कर सकते हैं. कंपनीज जो है वो अपनी ब्रांडिंग भी करा सकती हैं इसके ऊपर. कभी करंटली हम कुछ कॉर्पोरेट्स के साथ देख रहे हैं, अगर बल्क ऑर्डर होगा तो हम उसके ऊपर उनके लेबल के साथ, उनके लोगो के साथ दे सकते हैं. कंपनीज आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन दिस प्रोडक्ट क्योंकि वो अपने एम्प्लॉइज के लिए, जो कि सारे जिस तरह एंग्रो है, उन्होंने अपने सारे एम्प्लॉइज को घर पे वर्क फ्रॉम होम के लिए भेज दिया है. सेम गोज फॉर पेप्सी कोला, सेम गोज फॉर PMI. तो इन्हीं कॉर्पोरेट्स को हम देख रहे हैं और इन्हीं कॉर्पोरेट और इनको सबको हम ब्रांडिंग ऑफर कर रहे हैं. वी कैन ऑफर ब्रांडिंग टू एनीवन, जो कि मेरे ख्याल में 10 से ज्यादा टेबल्स जो है वो बाय कर सकता हूँ. तो ये इसके अंदर है. प्री ऑर्डर इज ओनली अवेलेबल फॉर कॉर्पोरेट्स राइट नाउ. उसके लिए यू कैन कांटेक्ट मी डायरेक्टली क्योंकि अभी ये प्रोडक्ट लाइव नहीं हुआ. आई थिंक इट्स गोइंग लाइव इन नेक्स्ट वीक, बट एज सून एज इट्स ऑन द वेबसाइट देन यू विल बी एबल टू ऑर्डर इट from website as well. But before that, pre-orders, you can contact anyone from Kickstart team.
Great. And if you can, when you do have time, if you can just drop a link to your Facebook page, and I think हमने recommend भी किया हुआ in the group. So please, feel free to visit the Kickstart Facebook page and order your desk today. Yeah. So anyone who, for Payoneer. So if anyone puts in Payoneer promo code, they will get a 500 discount off the table. There you go. I mean, what else do they need? I can activate this code tonight, so you can get it tomorrow. Yay! So Payoneer पाकिस्तान के ऑफिशियल ग्रुप मेंबर्स के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है. हसन जो है हमारे साथ ऐसा करते रहते हैं. लास्ट ईयर भी जब लाहौर में हमने फोरम किया था, हसन came to the forum and he was giving away discount vouchers for Kickstart. So it's an amazing thing. Thank you so much, Hassan, for sharing this. If you can just repeat it for anybody who's tuning in right now, how can they avail this offer, this promo code offer? Yeah, so they will have to just put in Payoneer promo code. The promo code is not active yet, but it will be just Payoneer, and we will activate it tonight. They can start using it from tomorrow. Whoever puts in the promo code, they will get 500 off on the table. And as soon as the new tables come, they will be able to use the same promo code on our Space Saver product as well. Excellent. And अभी हम जब हमने टेबल से पहले आप एक हमें कुछ बता रहे थे कि you have started operating again, आपके ऑफिसेस वगैरह जो हैं ये लाहौर की ब्रांचेस ओपन हो चुकी हुई हैं. थोड़ा सा उसके बारे में हमें एक रिकैप कर दें. And like, you know, when can, if anybody who's listening in right now wants to, let's say, come and speak to you in the next week and have a space, so what is it that you're offering right now? What kind of SOPs you're following? ताकि हमको ये पता चल जाए कि co-working space तो open हो रही है, मगर SOPs जो हैं safety के लिए वो सबके लिए बहुत जरूरी है. सही. सबसे पहले हम SOPs पे बात कर लेते हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम SOPs, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वेयर अ मास्क. जब भी हम कोवर्किंग स्पेस में एंटर होते हैं, वी ऑल ऑफ अस वी वेयर अ मास्क. जब हम अपने ऑफिसेज में आते हैं, यस, उस वक्त आप अपने ऑफिस के अंदर हैं, इट्स योर डेडिकेटेड स्पेस, नो वन एल्स इज यूजिंग इट, सो यू कैन बी सेफ इनफ. अगर आप मास्क उतार दें, कोई मसला नहीं है. अगर आप अपने डेस्क पे बैठे हैं, यस, यू कैन रिमूव योर मास्क, बट यू हैव टू बी इन योर डेडिकेटेड स्पेस इफ यू वांट टू वर्क विदाउट अ मास्क. Other than masks, temperature checks होते हैं बिल्डिंग में. Please cooperate with staff if you visit. Please listen to staff अगर वो आपको किसी चीज़ के लिए रोक लें. ये हमें थोड़ा सा मसला आता है कभी-कभी. But other than that, buildings जो हमारी कोई भी बिल्डिंग, किकस्टार्ट, गुलबर्ग की दोनों बिल्डिंग्स प्लस जॉर्जटाउन, if you visit those spaces, हम एक काफ़ी strict safety की गाइडलाइन फॉलो करते हैं for our members and for our spaces. सारी spaces पे सारे floors disinfect होते हैं time to time. और आई थिंक के इन सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ सो फार अभी तक हमारे पास अल्लाह का शुक्र है कि कोई एक्टिव कोरोना का केस बिल्डिंग में नहीं आया. वैसे मेंबर्स भी आजकल कम आते हैं, बट सो फार वी हैव बीन रियली लकी. Moving on to what Kickstart is offering right now, or what sort of value, how do we want to engage with Payoneer audience and a bunch of startups, freelancers out there. So अभी हमारी एक ऑफर चल रही है, flat 20% off. आप क्या कर सकते हैं? And this is we have actually reduced our pricing for the next 6 months because लोगों को कोविड की वजह से सबके businesses काफी खराब हुए हैं. तो co-working के अगर आप generally पूछें, the margins are 25 to 30%, not more. इससे ज़्यादा margins वैसे ही नहीं होते. So we have slashed our prices by a certain percentage. अगर आपको एक flat discount मिल सकता है for the rest of 2020, जितना अब ये साल बचा है, it's a very difficult year, so we want to pass on that benefit to people. But apart from these discounts, apart from these office space, what we want to do with right now with the community and how we want to go move on from here is कि basically हमारा जो business है, it's about helping people in doing their businesses. So what we are doing right now is we are offering a lot of services. इन सर्विसेज हम दे रहे हैं, लीगल की बहुत सारी सर्विसेज दे रहे हैं, लोगों को हेल्प आउट करें इन देयर कंपनी रजिस्ट्रेशंस, इन देयर बैंक अकाउंट ओपनिंग्स, with their partnership deals, if they want to start a new venture, especially foreign companies, they are always looking for these legal services. So this is something new which we have added recently to Kickstart, क्योंकि जिन लोगों को भी कुछ नया venture start करना है, we really respect those people and we would like to help them as much as possible. Second thing is कि बहुत सारे स्टार्टअप्स को हायरिंग के अंदर रिक्रूटमेंट और अकाउंट्स मैनेजमेंट, टैक्स, हमें अभी तक इसके अंदर इश्यूज आते हैं. 4 साल हो गए हैं, वी हैव बीन डूइंग दिस, बट स्टिल वी नीड
consultants, experts who can help us in this. So अब हम क्या कर रहे हैं कि previously we used to share office space, office facilities, and our members could share those services and the office space और उससे फायदा लेते थे. अभी हम जो है ना we are on we are getting people, experts in legal industry, experts in accounts, taxation industry, experts in digital marketing and other segments जो कि startups को और businesses को help out कर सकते हैं. And the idea behind, we are not an incubator. I want to separate it from the incubation model, because with Kickstart, it's always going to be that you are going to pay for the services, and you get value from what you pay us, or from what sort of services that you require from us. Incubation में ये होता है कि आपको mostly चीजें free मिल जाती हैं और it's mostly help और एक certain time period के लिए होती है. With Kickstart, we believe कि anyone जिसको इस एक business करना है, काम करना है, उसको अच्छी services की जरूरत है. कोई ऐसा मसला आमतौर पे हमारे स्टार्टअप्स को नहीं होता कि वो पैसे नहीं दे सकते या पैसे देना नहीं चाहते. मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स द प्रॉब्लम इज कि सर्विसेज ही नहीं मिलती. उनका कोई अगर लीगल डिपार्टमेंट्स के साथ उनका मसला है या गवर्नमेंट की रजिस्ट्रेशन उनकी नहीं हो रही, तो उनको एक्चुअली वहाँ पे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं. तो इन ऑर्डर टू उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, काम को स्पीड अप करने के लिए, ग्रोथ को इंश्योर करने के लिए जो नई सर्विसेज हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके पीछे भी कॉन्सेप्ट वही है, शेयरिंग. वी आर हम जिन लोगों को अपने पैनल पे ला रहे हैं, दे आर एक्सपर्ट्स, और वो जब आगे इन सबको सर्विसेज दे रहे हैं तो हम वी ट्राई कि हम बड़ी डिस्काउंटेड प्राइसेस के ऊपर बिजनेसेस को ये नेसेसरी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर सकें. Another idea behind offering all of these services is कि हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं. It's sort of कि आप एक बस Kickstart आएं, it's just a sort of one window operation. यहीं से ही आपको सारी सर्विसेज मिल जाएंगी. स्पेशली अगर आप एक ये फॉरेन कंपनी है या आप एक स्टार्टअप फाउंडर हैं और आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, बट यू डोंट हैव एनी आइडिया कि टीम कैसे हायर होगी, आपके लीगल काम कैसे होंगे, आपकी रजिस्ट्रेशन कैसे होंगी, आपका ऑफिस कब बनेगा, कैसे बनेगा, फिर उसके बाद आप अपने एम्प्लॉइज को कैसे हायर करेंगे और उनको कैसे चलाएंगे. रिसेंटली हमने पेरोल सर्विसेज भी स्टार्ट की हैं. तो अगर आपको एक एम्प्लॉय हायर करना है तो आपको और उसका पेरोल मैनेज करना है, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी अ चैलेंज. हम सिर्फ $5 अ मंथ के अंदर पर एम्प्लॉय के अंदर हम पेरोल उसका मैनेज कर रहे हैं, along with other services included in the same plan. So basically ये हो रहा है कि अगर मैं आपको उसकी पूरे इसकी जिस्ट बताऊं तो वो इस तरह कुछ होगी कि co-working is shifting from community to services. So this is what's happening right now. And this is what is required right now, because businesses to लोग करना चाहते हैं, people want to work, people are now sick of this corona and lockdown situation. They want to maneuver, they want to fix their problems. So at Kickstart we are figuring out all of those pain points, and we are trying to come up with a solution through which people can solve their problems and grow their businesses faster. Yeah. This was very informative, Hassan. Yani कि so anybody who's listening in right now as well, agar if you're starting up, if you're having challenges with arranging payroll, getting people on board with your team, so you know Kickstart is providing all of those services to you. And I mean, $5 for the payroll only. I mean, kudos, Hassan. Very good. Like this because this means that more people have access to it and more people can avail it. Yeah, and especially, and our main focus is the market segment for all of these services is basically companies coming from outside Pakistan. Those are the companies who need help. Those are the companies who don't have connections with Pakistan, and I think this is our only channel through which we can bring revenue to country. And those are the companies who, if they scale, they always have bigger team size. So I think we are looking for that, and we are looking कि किस तरह हम जो है ना बाहर से companies के लिए we can create ease of doing business for them. So the idea is around basically creating ease for people, ease of doing business for people, ease of doing business for companies. That's the main idea, and I think as we move on, as we add more services to our portfolio, we are going to make it
very simple for companies who want to come from anywhere in the world and start their operations in Pakistan. So I think the whole process, जिसमें एक company बाहर से आके पाकिस्तान में operation start करती है, we want to ये तकरीबन 1 महीने से लंबा नहीं होना चाहिए. This is what I think कि 1 महीने से ज़्यादा आपको नहीं लगना चाहिए कहीं से भी from anywhere in world कि आप पाकिस्तान आए, आप यहाँ पे आके अपनी एक टीम अपनी सेटअप करें, एक ऑफिस सेटअप करें, register your company, register your bank account, have your legal matter sorted and start your business. So this entire time period should not be more than 30 days, and this is what we are aiming at right now. Very interesting. So we have a comment from Shahid Anwar, और वो कह रहे हैं कि हसन को कहें कि बुक शेल्फ्स भी बनाना शुरू करें because reading is important as well. And Shahid साहब, I do agree, reading is very important. And वो कह रहे हैं कि अगर हसन आप बनाएंगे book shelf, तो he'll be the first buyer. Well, I'll be your second buyer. So, okay. Will you think about making bookshelves? Yeah, definitely we will. जैसे ही हमारे पास थोड़ी और इसकी कैपेसिटी बिल्ड होती है तो yes we will look into this. We are और ये टेबल about if I tell you about this table, वो हमारा इसके ऊपर क्या टेक है, हम इस तरह के प्रोडक्ट्स इसलिए लॉन्च कर रहे हैं to basically add a new revenue stream to our co-working business. Because ये अभी it's the need of the hour. You have to be cash rich. You have to have good cash flows for the coming months. और I think कि अगर कोई भी कोवर्किंग स्पेस है या कोई भी स्टार्टअप है जो पाकिस्तान में चल रहा है जिसको कैश फ्लोज के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, they should look into adding more revenue streams. It could be a conventional product, like a table is a very conventional product. I could never think of being in furniture industry, but I think this is something that you have to do, considering के इस वक्त जो 2020 का जो सिनेरियो है, आपको इस टाइम पे कैश चाहिए for your team, for your future as well. तो उसके लिए अगर आपको इस तरह के products add करने पड़ते हैं, तो I think now is the time you should look into all those products, all those services that can help you add revenue to your existing streams. Agreed. I mean, एक से ज़्यादा income streams हो तो और क्या ही चाहिए, and if you can use your product to be able to diversify it in such a way कि आप उसके through जो है अपनी जो है revenue streams open करें, तो that's amazing. हसन, मुझे वक्त का बिल्कुल नहीं पता चला. I mean, तकरीबन हमें काफी वक्त हो गया बात करते हुए. मुझे भी नहीं पता चला बिल्कुल. Yeah, we have 5 more minutes. Yes. So I'll just see if we have any relevant questions. I think Mohammed Salim ने हमें भी थोड़ी देर पहले join किया है. वो हमारे से पूछ रहे हैं what is new. So Salim, आप प्लीज शुरू से ये live जरूर देखिएगा. बहुत सारी new चीजें हैं जिसके बारे में हमने बातचीत की है, जिसके बारे में हसन ने हमें बताया है. Hassan Shahid is the co-founder of Kickstart co-working space based in Lahore. Lahore में इनकी 2-3 branches हैं co-working space की. इन्होंने भी हमारे साथ share किया है कि इन्होंने कैसे Kickstart co-working space इन्होंने किस तरह से शुरू की, and during pandemic how did they diversify their product and जो है अपने brand promise से जो है रहते close रहते हुए उन्होंने जो है लोगों को तो अपने physical premises में नहीं बुला सके for co-working space वाली like उसके लिए co-working space use करने के लिए, but जो है उन्होंने they diversified and they made desks which can be built in 10 minutes, within 10 minutes, Hassan? Yeah, within 10 minutes. Yeah, that's what we claim. Yes. Yeah. Yes, so right now, one of the tables that they already have is made of cardbox, and you can go to the kickstart.pk website and order yours now. एक जो है एक हसन ने एक और interesting हमारे साथ चीज़ शेयर की है कि वो wooden tables की तरफ भी जा रहे हैं. So that's something that we will look forward to in the following weeks. Kickstart co-working space के Kickstart co-working space जो है अपने लोगों को अभी और भी offers दे रहा है for reopening as well. So I would highly suggest कि please kickstart.pk website visit करें and go check out their Facebook page, have a word with the community. The community is really awesome. They're willing to help and support in any way that you would need help with. And Hassan, मैंने सही sum up किया है, मैं कुछ भूल Yeah, exactly. Yeah, and finally मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मतलब if you want to kickstart something, you can call Kickstart. So this is what we do. This is what we are trying to like help people with. So किसी को अगर कुछ भी अगर उन्होंने प्लान किया होगा for the next month, उनके कोई future goals हैं that they can share with us, उनके कोई problems हैं जो कि नहीं हल हो रहे, कोई सरकारी departments में कोई issues हैं, they need any sort of legal assistance, so they can talk to us, drop us a message.
हम कोशिश करते हैं कि हम सारे मैसेजेस को रिस्पॉन्ड करें, और अगर हम कभी नहीं कर सकते सो वी ऑलवेज ट्राई कि हम वो सर्विसेज स्टार्ट करें एंड देन एंगेज विद दोस लीड्स. सो yeah, that's it. That's pretty much it what we do. Yeah. That's excellent. And Hassan, this was an amazing GupShup with you. Thank you so much for taking our time and speaking to the Payoneer Pakistan official group. आपने जो points share किए हैं, आपने जो information share किया है, I think मैं और मोहसिन तो अपना नाम आपके पास लिखवा ही रहे हैं pre-order के लिए. So anybody who wants to catch the offer, please follow the Facebook page and reach out to the community. They will respond to you accordingly as well. Yeah. So Hassan, thank you so much. Have a great evening and a great weekend, everybody. Take care. Bye-bye. Take care. Bye-bye. Bye.